Alright, yes. Good evening, everyone. Welcome to Lukmaan IAS. This is DTRS session, Daily Takkar Rapid Series, and this is class 75. So, 75 years of independence. ठीक है, तो basically we are counting these classes after prelims 2023. ठीक है, तो अगले साल का जो prelims होगा आपका prelims 2024. So we are having this target for prelims 2024. इससे पहले भी हमने शुरू किया हुआ है, right? So basically from December 2022. We have all these sessions available freely on Lukmaan IAS YouTube channel. So उससे पहले के जो है उसका आपका नंबरिंग अलग होगा, ठीक है. So you can watch those videos also because current affairs, if we see relevance of current affairs for prelims examination, generally I tell students that it is 15 months or 18 months. ठीक है, before prelims 15 months, or we can say that before mains it is 15 months. जनवरी से आपने शुरू करना चाहिए पिछले साल के दिन. So you can go through the previous videos also. Also some students are asking in the comment box that yes, good evening Rutu. So some students were asking that compilation of all this DTRS. Yes, for quality 200 MCQs out of these DTRS sessions. We are compiling in a monthly magazine kind of thing, 200 MCQs, then the explanation. ठीक है, मतलब जैसे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स का, तो वैसे आप करंट अफेयर्स का भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, एंड रिवाइज भी कर सकते हैं. सो इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन लुकमान आईएएस, वी कैन से वेबसाइट और पोर्टल. ठीक है, जो पोर्टल में जाओगे तो वहां पे रिसोर्सेस जो ऑप्शन है, तो वहां पे जाने के बाद आपको दिखेगा डेली एमसीक्यूज का कंपाइलेशन मंथली मैगजीन में. ओके, सो यू कैन गो थ्रू दोज ऑल्सो. Till May we have uploaded. Now in within week we are going to upload the June and July files also. ठीक है. Now today's lead topic is what is two pillar solution in economy. Okay, so we'll discuss the 10 MCQs based on today's 10 topics, but what we are doing daily, we are first discussing one quotation, the quotation which is helpful for essay preparation or ethics paper preparation for mains examination. All our knowledge begins with the senses, proceeds then to the understanding, and ends with the reason. There is nothing higher than reason. Okay, so Immanuel Kant, we read about his philosophy of deontology in ethics paper, GS4. So duty ethics, he says that actions are end in themselves. Action should be end in itself and not linked to we can say any particular purpose, intention, or ends, we can say, right? So what he is saying through this, three parts are there. All our knowledge begins with our senses. Generally we say no, 5 senses. Whatever the information that we are receiving through these 5 senses. We are hearing something, we are reading through our eyes, we are observing the things from our eyes, we are sensing we can say different smells through our we can say nose. Basically we are getting all the information through 5 senses. Once we get this information, what happens? Processing. So our mind starts processing that information, or we can say knowledge, and it we can say that leads to understanding. Okay, so whatever I am hearing, so that knowledge is basically understood on the basis of we can say processing. ठीक है, जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन हमें रिलेवेंट लगता है वो हम हमारे माइंड में रखते हैं, बाकी जो है हम भूल जाते हैं. ऐसा भी होता है, राइट? ऑफ कोर्स, बिकॉज एवरीथिंग दैट वी सी वी डोंट रिमेंबर. रास्ते पे चल रहा है तो क्या हम सारे गाड़ियों का नंबर प्लेट थोड़ी याद रखते हैं, एक्सेप्ट ट्रैफिक पुलिस वाला. ठीक है, तो 5 सेंसेस जो है उससे हम नॉलेज लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस करते हैं. बेसिकली दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस देयर आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग एंड्स विद रीजन. रीजन इज बेसिकली वी कैन से दैट एप्लीकेशन ऑफ रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग. Okay, application of rational and critical thinking. So that means once we get the knowledge and understand that, then we question why this is happening like this, why this, why not that. ऐसा जब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं ना,
based on reason. ठीक है, this is the unique capability of human species. ठीक है, critical questioning or we can say so reason, rational and critical thinking, then it leads to, we can say, ultimately wisdom, the sixth sense generally we call. ठीक है, wisdom, wise person we can say. So wisdom is nothing but, we can say, knowledge plus right understanding plus right application of that understanding. That is wisdom, we can say. Okay, so there is nothing higher than reason. This is what he is saying. Okay, so once the person is having the reason developed in his mind, then we can say that that person, and Aristotle, what Aristotle says, this is chief good. The person should always aim to achieve wisdom in his life. ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोल सकते हो, एनलाइटनमेंट बोल सकते हो, बेसिकली दे आर सिनोनिमस टर्म्स. ठीक है, अंडरस्टूड, फाइन. लेट्स टॉक अबाउट नाउ टुडेज 10 टॉपिक्स. Okay, these are today's 10 topics. We will discuss them one by one. Okay, yes. First one, term based questions. I told you already, from 4 areas: economy, ecology, science and tech, IR, international relations. Term based questions. 2 pillar solution. It was recently seen in news in the context of economy, and yes, it is related to. क्या होना चाहिए इसका आंसर? Yes, online students, those who have joined online, try to give your answers simultaneously. किस context में ये news में था? Recently G20 summit had happened and there was discussion on basically blockchain, cryptocurrency, not blockchain, cryptocurrencies, right? उनका regulation होना चाहिए. There should be taxation also, and if all countries have let's say uniform rules and regulations governing cryptocurrencies, then only we can say that can be appropriately regulated. So basically the 2 pillar solution is related to a framework to address tax challenges arising from digitalization and globalization. Okay, digitalization, like example is cryptocurrencies. Now cryptocurrency transactions are happening across the borders. ठीक है, एक कोई कंट्री में बैठा है, ट्रांजैक्शन दूसरी कंट्री में हो रहा है. ओके, सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन, इट इज रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड इट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन, राइट? सो दैट्स व्हाई द कंट्रीज आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस हाउ टू टैक्स दीज ट्रांजैक्शंस which are digital transactions. Okay, and yes, of course there is international or cross border transactions. ठीक है, तो इसको कैसे डील करना है, उसको फ्रेमवर्क को बोला जाता है 2 पिलर सॉल्यूशन. ठीक है, तो एक पिलर जो होता है डिजिटलाइजेशन के लिए, दूसरा पिलर सॉल्यूशन होता है ग्लोबलाइजेशन के लिए, इस तरीके से. ओके, सो यस, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. रिमेंबर दिस. फाइन, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, these terms were in news. Yes, Vijay. Okay, my volume is low. देख लो एक बार. Yes, other students, are they facing same problem online? ठीक है? Okay, fine. Yes, what should be the answer to this question? These terms were in news. Dolmen, cyst, menhir. These terms, dolmen, cyst, menhir. जनरली सिस्ट हमारे बॉडी में तैयार होता है तो हम लग सकता है उस तरीके से, बट दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू बेसिकली मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स. ओके, मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जनरली we see in the ancient times, the megalithic structures were built by the people, especially around burial sites. मेगालिथिक स्ट्रक्चर जो होते हैं बुरियल साइट से होते हैं, है ना? सो different areas, they are known as different terms. Dolmen, cyst,
बड़ी बड़ी पत्थर जो है वो उसका स्ट्रक्चर्स तैयार करके रखते हैं, ऐसे बड़े पत्थर खड़े करके रखना. आई विल शो यू हाउ दे लुक लाइक. ठीक है, सो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स, ए इज द करेक्ट आंसर हियर. Okay, let's see how they look like in the pictographic form. Look at this. Menhir, ये है stone circles, या फिर सिस्ट डोलमेन. ठीक है, सिस्ट में एक खड्डा होता है, या फिर डोलमेन जो है ऊपर बड़ा पत्थर रखा हुआ है. बेसिकली दे आर एसोसिएटेड विथ burial sites. They are megalithic sites, we can say. Fine. Sorry, that's what I'm telling you. Burial sites, जो मरने के बाद जो लोग को बरी किया जाता है, तो उसके रिमेम्बरेंस में वो क्या करते थे, ऐसे बड़े पत्थर रखते थे. ठीक है, तो ये है. ठीक है, राइट. With reference to Nipah virus, so yes, in recent past we know that in Kerala, Kozhikode district of Kerala, few cases of Nipah virus were seen, and there are concerns, health concerns. Now we are covering this topic from time to time. तो न्यू एंगल आता है कोई, तो उसमें हम ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं. Nipah virus. So first statement, already we have covered the basics yesterday or day before yesterday in one of the MCQ. Yes, the natural host of Nipah virus is fruit bats. That is true. Belonging to this, what you can say, Pteropodid family. Difficult to pronounce. ठीक है, सबसे मतलब क्या बोलते हैं कि हाँ, साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस होते हैं, है ना. राइट. नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ निपा वायरस इज पॉसिबल. इनकरेक्ट है. There is possibility, right? Animal to human first आएगा, zoonosis, and then human to human transmission. Although the transmissibility is, we can say, less as compared to coronavirus, है ना, but fatality rate is very high. ठीक है, so we can say this is incorrect. First one is correct. Answer is fine. Okay, so A is the correct answer here. Right. Okay, so recently we know that there was earthquake in Morocco. ठीक है, मोरक्को में earthquake हुआ था. Now you tell me, apart from this, in Morocco earthquake has happened, in which we can say kind of boundary, plate boundary is there. What kind of plate boundary we have along the Morocco or that North African region? Yes, convergent boundaries. But convergence of what? Continent, continent, ocean, continent, or ocean, ocean. There is continent, continent convergence. Okay, Eurasian plate and African plate. Okay, so you should understand that continent, similar to what we have Indian plate and Eurasian plate, and that's why the formation of fold mountains, Alps fold mountains. Continent, continent, we can say. Mediterranean Sea is kind of, we can say, geosyncline. Okay, like there was Tethys Sea between this, how Himalayas were formed. So we can consider Mediterranean Sea as geosyncline. After thousands of years, this may, we can say, become we can say shallow water body like geosyncline in future, as there is convergence continuously going on. Now because of that also we can say the Atlas mountains are formed, and the Morocco region is, we can say, tectonically active. Recent earthquake, thousands of people died in that earthquake. So with that context, mantle convection currents, yes, because of that only plates are moving, right? Therefore there will be fault creation, and we can say it may result into tectonic activity, tremors, volcanic eruption, one of the reason. ठीक है, ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक है, ये वोल्केनिक अर्थक्वेक है. जियोलॉजिकल फॉल्ट्स, अगेन जनरली अर्थक्वेक्स आर देयर अलोंग द फॉल्ट्स. सो टेक्टोनिक रीजन, ridge push, mid oceanic ridge is basically pushed away along the central zone, we can say that. So that is also, we can say, tectonic region. Shallow focus earthquakes are observed there, mid oceanic region.
So all of this is correct answer here, right? Yes, D is the correct answer, right? Okay, good. No, deep seated earthquakes are more dangerous. Right. But it will travel at lesser distance, no? It will easily dissipate. No, it will easily dissipate. Try to understand this. It is not covering larger areas, and it is going to easily dissipate, not creating much destruction. Deep seated earthquakes are problem, right? These deep seated earthquakes, what happens is they are covering larger distances, they are covering larger distance on the surface, right? And when they are reaching on the surface, again there will be surface waves created. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा as compared to we can say shallow earthquake, shallow focus one. ठीक है, so all is the correct answer. Let's talk about next. देखिए आज द हिंदू में एक फैक्ट शीट वाला जो होता है डेटा पॉइंट में क्या लिखा है, डेडलीस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक्स रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑन द अर्थ. There was this question in mains examination in last 1 year. Mention 5 volcanic eruptions that had happened in last 1 year. ऐसा क्वेश्चन था ना. तो पिछले 1 साल में मेजर अर्थक्वेक कहाँ हुए हैं, आपको ये भी याद रखना है. या फिर मेजर इंस्टेंसेस ऑफ earthquake in the past that is resulting into huge we can say human casualty. Disaster management में क्वेश्चन आता है समझो earthquake का. You can mention one of these. You can see the latest one, Haiti 2010, around 3 lakh people died. 2014 Nepal earthquake, you can mention that, or most recent Morocco, that example. ठीक है, fine. So this Palmanis Godawan and Palmanis Maldhok, what are this? Let's say I don't know about what this space this let's say names are there, but on the basis of knowledge that I have, ठीक है, तो उससे क्या आंसर कर सकते हैं क्या हम इसको, बताइए. How come? Use logic. I can understand आपने शायद इसको फॉलो अप नहीं किया होगा करंट अफेयर्स में, बट बेसिक नॉलेज से क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? This is how the students who are clearing prelims examination every year, they use this kind of logic in almost 4-5 questions जो उनको इन करते हैं. जो बाकी स्टूडेंट जो कट ऑफ से नीचे होते हैं ना, इनको ऊपर लेके जाते हैं इजीली. गोदावन एंड मालधोक ये क्या है? यस ऋतु, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गोदावन और मालधोक किसको बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में? हाँ? ठीक है, वो स्पाइडर स्पेसीज है. दोज हु आर फॉलोइंग करंट अफेयर्स उनको पता होगा. बट गोदावन एंड मालधोक आर लोकल नेम्स ऑफ बेसिकली जायंट बस्टर्ड और इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB. ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज लोकली नोन एज गोदावन और मालधोक. तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहां पे पाया जाता है? डेजर्ट्स में. ठीक है, ऑप्शंस देखिए. Desert National Park is a very important natural habitat of Great Indian Bustard. Getting this? And these new species of spiders are named after this GIB, Great Indian Bustard, local name. ये उसका लिंक है. Getting this? So
फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, PYQ आप अगर पढ़ रहे हैं, बहुत बार उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं GIB पे, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे. सो फ्रॉम दैट यू गेट द आइडिया कि दिस इज गोदावन, लोकली कॉल्ड एज गोदावन और मालदो. तो फ्रॉम दैट आई विल यूज लॉजिक. अच्छा, ये तो नेशनल पार्क में उधर का है लॉजिक, ठीक है. सो आई विल यूज दैट लॉजिक. अच्छा ये है, तो स्पाइडर स्पेसिस मुझे पता भी नहीं है, स्टिल आई विल मार्क दिस. This is how we use our own understanding, own knowledge to get the right answer. ठीक है, प्रीलिम्स में आपको 100% नॉलेज की जरूरत नहीं है पास होने के लिए. यही एक स्टूडेंट का हमेशा मैं देखता हूं कि इंफॉर्मेशन के पीछे भागते हैं स्टूडेंट. इसका मैगजीन पढ़ लिया, उसका मैगजीन, अरे कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है. अच्छा ये पॉइंट, मतलब डिस्कस करते होंगे ना 4-5 स्टूडेंट से, अच्छा तुमने वो पढ़ा है, तुझे ये पता है, इस टाइप का. नहीं पता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल आई विल गेट थ्रू. अंडरस्टूड दिस? सो यूज we can say that logic, that kind of, we can say, techniques in solving MCQs. Okay, named after great Indian buster. ठीक है, okay. Yes, yesterday I guess we talked about tea board of India, tea crop. आज कॉफी पे ऊपर क्वेश्चन बनाया, क्योंकि कॉफी प्रोडक्शन हैज रिड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ अनइवन एंड अनटाइमली रेनफॉल. तो उसकी वजह से ये न्यूज में है. कॉफी इज अ ट्रॉपिकल प्लांट विच इज ऑल्सो ग्रोन इन सब ट्रॉपिकल एरियाज. दैट इज ट्रू, राइट? यस, कॉफी कल्टिवेशन इन येमेन, सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है. So from that you can use the logic. Yes, largest coffee producer state in India. Very good. Karnataka. More than 50%, around 70% production happens in Karnataka. So factually it is incorrect. Okay, so it's Karnataka. Now, Coffee Board of India is a statutory body and its headquarters is located in Bangalore. This is true. Okay, so third statement is correct. First correct. यहाँ पे only 2 is the correct answer, right? Yes, very good. Yes, Karnataka is, we can say, correct factually. Now let's talk about next. बहुत सारी हमने डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, लाइक फैक्टर्स वी कैन से रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस कॉफी क्रॉप. तो आपको कॉफी प्लांटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है. जैसे टी का क्वेश्चन आया हुआ था पास्ट में, तो अभी कॉफी का आ सकता है. Okay, so climate, what kind of climate is required? Why coffee plantations are, we can say, generally north facing and east facing, grown on north facing and east facing in Karnataka? Any idea? They are never west facing or western slopes, we can say. One of the reason, okay, excess rainfall will happen along the western, but major reason is not that one. To protect from sunshine, ठीक है. ये जो सदर्न स्लोप्स है, वेस्टर्न स्लोप्स पे समझो रेनफॉल है, सदर्न स्लोप्स पे ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर होगा, बट नदर्न स्लोप और ईस्टर्न स्लोप. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन इज जेंटलर स्लोप. वेस्टर्न घाट्स पे जेंटलर स्लोप कहां पर होंगे? मॉडरेट स्लोप बोलते हैं हम इसको, तो वो ये होता है. स्टीप स्लोप्स वेस्टर्न स्लोप्स जो है, ठीक है. यस, सो दीज आर, वी कैन से, रीजंस. एंड यस, टेम्परेचर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, वी कैन से. एंड शेड, डायरेक्ट सनलाइट इज हार्मफुल फॉर कॉफी प्लांटेशंस, ठीक है. ये आपको याद रखना है. ओके, ठीक है, फाइन. Yes, already we have covered this topic in past. Again, we'll cover carbon border adjustment mechanism. This particular mechanism is proposed by, no idea. From how many months, since how many months you are covering current affairs? Since April or May. ठीक है, तब तक तो 1-2 बार तो आया ही होगा न्यूज में ये, ठीक है. इट इज इम्पोर्टेंट वन.
International initiatives in climate change, or we can say environment section, very important for our examination. So carbon border adjustment mechanism is proposal of European Union, not UNDP. I will anyhow eliminate first one. UNDP does not deal with climate. It focuses on development, poverty elevation or such kind of programs, SDG से related. ठीक है, तो I will eliminate using that logic. ठीक है, then it will impose tariffs on imports from the countries that are seen to be using carbon intensive methods of production. This basically is brought for this reason only. So what it will do, the European countries, they will have tax on those products which are manufactured using more and more कार्बन इंटेंसिव प्रैक्टिसेस. समझो फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे. ठीक है, हाँ, यूज ऑफ कोल और वी कैन से अदर फॉसिल फ्यूल्स. सो दिस इज एक्चुअली अपोज्ड बाय इंडिया. Developing countries will not agree with this because they are not completely phasing out fossil fuels. They are very much dependent at present on fossil fuels. So I will use that logic and I will eliminate this. India opposes this proposal. ठीक है, so this one is incorrect, this is correct, first one incorrect, only one statement is correct here. ठीक है. No, it is not related to carbon trading. Okay, we can say it is carbon tax, but it is specifically for cross border movement of goods, imports के related and certain products. ठीक है, carbon tax basically is for polluting activities. होता है ना domestic में, तो ये polluting activities के लिए ही है, but those activities basically done outside the country, but that product is imported in the country. Getting this? तो उस पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट. In past we have covered this topic special session, but the other two statements are different one. क्या होना चाहिए इसका आंसर? Yes, the term special session of parliament mentioned in the constitution of India. This is incorrect. Capital होना चाहिए था. ठीक है, so this is incorrect. It is nowhere mentioned in the constitution. Rather, special session is convened from time to time by the government, especially to commemorate the historical events. Like today's news, what is the agenda? The major agenda is to commemorate 75 years of independence, right? So historical event. Also they will discuss some bills. ठीक है, the President of India determines the date and duration of parliamentary sessions. President has nothing to do with it. Rather, it is the government. It is the government. And yes, it is the Committee on the Parliamentary Affairs that decides all this date, and generally government convenes this. ठीक है, or decides, we can say. So this is incorrect. Indian Parliament has no fixed calendar of sittings of these houses. Parliamentary houses. Okay, so this is true. There is no fixed calendar. ठीक है, पहले मतलब एक साल पहले ही जनवरी को मतलब डिक्लेयर कर दिया कि साल के ये दिन पे ये मंथ में हम ये सेशंस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना. There is no fixed. Okay, so we can say this is incorrect. Then we can say sorry, this is correct. First and second is incorrect. Again answer is A, right? Okay, fine. And then next, consider the following. Greenhouse effect. The natural greenhouse effect that we have on the earth's surface. Above factors, how they contribute in a decreasing manner. क्या होना चाहिए sequence? 1, 3, 2, 4. Okay, but answer is here A, 1, 2, 3, 4.
The largest we can say 50%. This year's prelims MCQ on water vapor. You remember this year's prelims MCQ on water vapor. This was related to ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग जो कंट्रीब्यूशन है इफेक्ट में, तो वो वाटर वेपर का है. ओके, एंड देन वी कैन से द क्लाउड्स. which clouds contribute to the greenhouse gas effect, or we can say warming of the atmosphere? High clouds. उस पे भी लास्ट ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आया था इसी से रिलेटेड. हाई क्लाउड्स, लो क्लाउड्स. हाई क्लाउड्स contributes to the warming of atmosphere. क्यों? The earth's terrestrial radiations are reflected back by these clouds into the atmosphere. ठीक है, yes, cirrus clouds is one of the example. High clouds जिसको हम बोलते हैं, right? So they are second largest contributor. Carbon dioxide thereafter. Ozone is also we can say contributor. Let me show you that. इसका A आंसर है. एक पाई चार्ट में आपको इस तरीके से कंट्रीब्यूशन पता चलेगा. 50% वाटर वेपर, क्लाउड्स 25%, thereafter carbon dioxide 19% and others 6%. There was this article in Down to Earth. Such information is very important for environment section. ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है जीके टाइप के आ रहा है एनवायरमेंट सेक्शन में, बट आपको सिलेबस टॉपिक पता है PYQ से. ठीक है, सो विच एरियाज यूपीसी इज आस्किंग क्वेश्चन. ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर पास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, सो दैट्स व्हाई वी एक्सपेक्ट सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू. Okay, fine. Last question. Before last question, let me also tell you that ठीक है, all of you are doing continuously following these sessions and we appreciate that. And अगर आपको सच में ही अच्छा लगता है ना, तो बाकी फैकल्टीज की तरह मैं डेली पूछता नहीं हूँ. एक्चुअली क्या होता है ना, बाकी फैकल्टीज जो यूट्यूब पे होते हैं फ्री लेक्चर्स देने वाले, स्पेशली current affairs पे, there are n number of lectures, n number of faculties talking, and what they will do just to increase the views and we can say that becoming online famous teacher or something like that. I don't know about their content, I have seen many of them. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा अच्छा है या इस तरीके से, but rather what they will do, they will not start the session unless or until they, you know, they find certain number of likes, certain number of people joining the discussion. Rather, I find that delivery is more important and quality is more important. But एक ये भी तो है ना कि of course the videos are not reaching to the masses, more number of students. So I expect कि if you are watching daily videos तो आप उसको like कर दीजिए at least. आप ठीक है, आपको doubts है उसमें आप बता सकते हैं, comment करके पूछ सकते हैं. Like विजय ऋतु, they are commenting. ठीक है, so this is appreciated. So I expect that कि आप सारे जो वीडियो देख रहे हैं तो almost 100, more than 100 views are there, तो आप क्यों ना सारे के सारे लाइक कर दे. ठीक है, आपको नॉलेज मिल रहा है ना, रिलेवेंट लगता है ना आपको, तो क्यों ना आप जो सारे देख रहे हैं उसको लाइक कर दीजिए बस. ये 100 का आप 1000 तक यूट्यूब खुद से ही पहुंचा देगा. ठीक है, एंड देयर इज दिस सेइंग, नो, नॉलेज दैट इज शेयर्ड मल्टीप्लाइज मैनीफोल्ड्स. ठीक है, बहुत बढ़ता है, उससे कम नहीं होता है नॉलेज किसी का. शेयर करने से वो बढ़ता ही है. ठीक है, अब हम इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं. ठीक है, नहीं तो हम इसको ओपन सेशंस रखते ही नहीं. हम इतना टीम वर्क कर रहा है MCQs बनाने में और आपको डिलीवर करने में, राइट? यस. सो फाइनल क्वेश्चन, सिकल सेल डिसीज. देयर वाज दिस आर्टिकल इन द हिंदू न्यूज़पेपर. So sickle cell disease is problematic, especially the anemia, sickle cell anemia, right? So that is problematic. It is a group of inherited red blood cell disorder. So we can say that it is genetic disorder, sickle cell diseases or sickle cell anemia. Now what happens here is this sickle cells are getting formed, the red blood cells are converting into sickle cells. सिकल सेल, सिकल कैसे दिखता है? इस तरीके से ना, जो क्रॉप्स को काटने के लिए यूज होता है. तो इट लुक्स लाइक दिस. लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट.
In this disease, red blood cells become hard and sticky and look like C shape. Okay, this is true. But the third statement, the cells never die, which cause pain and infection. Rather, it's opposite. The cells are basically, we can say, short-lived. They are dying easily, and that's why red blood cells amount in the body is decreasing. And red blood cells are very important. They are transporting the oxygen and other important, we can say, nutrients to all part of the body, other organs. So this, what they are doing, sickle cells are basically enemy of other cells. Okay, so this is problematic, and we can say that that leads to infection and pain, infection of other organs in the body, right? So ये जो never die वाला जो है वो गलत है information. This is incorrect. First and second is correct here, and that's why B is the correct answer. ठीक है? Why this sickle cell disease mainly occur in the tribal regions? हाँ, see, as it is inherited, no, so certain genes that are continuously carried forward in that region, they are reflected in the offerings, no? Are you getting this? Certain genes are carrying that information, and that is reflected in the offsprings, right? As it is genetic disease, so it is limited to that group of population. The tribal people, are they having let's say marriages out of that population? No. If the marriages are happening, we can say in the other groups, with the other groups, then there can be suppression of that gene. There are chances that there can be suppression of that gene. ठीक है? Genetic disorders कब visible ज़्यादा होता है? Then when there is in-group breeding. इन ग्रुप ब्रीडिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो क्लोज फैमिली मेंबर्स में शादियां होती है ना, जिसको बोला जाता है ना कि प्रॉब्लमैटिक है मेडिकल सेंस में, क्यों? जेनेटिक डिसऑर्डर्स. मोर चांसेस दैट जेनेटिक डिसऑर्डर्स विल बी प्रेजेंट इन द ऑफस्प्रिंग्स, है ना? यस, yes, it blocks the blood flow when they become thick, hard and thick. ब्लड फ्लो ब्लड वेसल्स में से ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है? सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर. एनी क्वेश्चन? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चंस यू आर हैविंग? इन जनरल क्वेश्चंस आल्सो यू कैन आस्क. All right, so one more thing I wanted to tell here. Now mains examination is there. Those who could not clear the prelims this time, they should see what kind of questions the mains examination is having. They should have follow-up. I always tell students that you should not think like you are not writing mains this time. I always tell students that आप ऐसा प्रिपरेशन करिए इवन आफ्टर प्रीलिम्स, नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स, कि आप ये मेंस लिख रहे हैं. उससे क्या होगा? You will be able to understand the level of preparation you had for mains. और ये 0th अटेम्प्ट की तरह इसको मेंस एग्जाम हो गए, समझो आज GS1 और GS2 हो गया, कल उसको लिखिए एज इट इज, आप लिखिए उसको और देखिए कि आपको क्या ये अटेम्प्ट करने आता. इससे आपको समझ में आएगा कि आपका मेंस का प्रिपरेशन कितना था. अंडरस्टूड? तो यू ऑल्सो ट्राई टू डू. उससे आपको समझेगा कि कौन से एरियाज आपके वीक थे. अच्छा, ये मुझे नहीं आया है ये क्वेश्चन, ये एरिया वीक था, तो अगले 3 महीने वी कैन वर्क ऑन दिस, राइट? ओके. एडिटोरियल्स के सेशंस, यस ऑफ कोर्स वी हैव सेपरेट ईडी क्लासेस, नो, अलग से सेशंस. तो ऑफ कोर्स द हिंदू एनालिसिस हो रहा है, जयदुल सर इज टेकिंग, राइट? सो यू कैन फॉलो दोज सेशंस. ईडी क्लासेस मैं खुद लेता हूँ अलॉन्ग विथ अदर फैकल्टीज. आई जनरली फोकस ऑन एनवायरमेंट सेक्शन, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी. ठीक है, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोज, एडिटोरियल डिस्कशन वाले. ऑल्दो इट इज पेड कोर्स, some of the sessions we are uploading on YouTube. ठीक है?
Okay, fine then. Let us stop.